invite Dr. Maithili for the next session. अभी तक हमने पिछले 2 दिन में जो कुछ देखा उसका एक brief summary होगी. Then we will proceed to the next 2 technical sessions. Dr. Maithili. And also Dr. Manas. Thank you very much. Very good morning, all of you. And Honorable Vice Chancellor ma'am, very good morning to you, and Professor Madhu ma'am, Dr. Manas, Dr. Asutosh, and all the participants. So this is the last day. We will recall the what we have done last two days, and after that, I think I'll request Dr. Manas to highlight the policy, OER policy and all. After that, again I will take up how to incorporate OER in our text material, and then some of the I plan for one quiz, so we'll try it how we can do it, because that is a free one, so we can try that also to recap the whatever we have learned these 3 days. So before getting into that, I'll open my PowerPoint presentation. Dr. Manas, please give me the permission to share my slide. Okay, so by the time we will discuss that, we have seen, we have learned what is OER and what are the licensing, and also I'm glad that some of the participants has completed the course which we have recommended, that is understanding OER. Then we have discussed the 6 licensing, which is and also 5 hours how we can use for this revise, redistribution, remix, and retain. That also we have discussed. And yesterday where we have discussed about how to search the OER in the Google search engine. That is which most of us used to search through Google search engine only. That is a very familiar search engine. So we mostly use that one. So from that, हम कैसे उसको यूज करके गूगल सर्च इंजन को यूज करके वहां से OER कैसे सर्च करेंगे, OER content कैसे सर्च करेंगे, and we have seen that how they have placed the OER licensing in their website, also in the document, also in the book material, also how they have placed the OER licensing. And also yesterday we have seen that one of the participants also asked how to view the Orissa Open University learning resources, how they have placed their OER policy, and then how they have chosen their licensing, OER licensing, that is CC by SA, how they have placed in their text material also we have seen. And then yesterday we have discussed the how to select OER video content in the YouTube also. So we visited the YouTube site, and then we have searched the OER based YouTube videos, how we can use it for our teaching learning purpose. That also we have discussed. And various places where also we have discussed the how to select different images, OER images and OER music. These are the various component which is used for our teaching learning purpose. Generally we use the teaching learning purpose text material, video material, audio material, and images, and some links we used to give, that is hyperlinks and all we used to give for the further reading also. These all are we have seen yesterday we have discussed. And also we have discussed some of the
OER, how we can mix with other OER licensing. That is very important. So that one, I think all of you able to see my PowerPoint presentation. So in this presentation yesterday also we have discussed this one. 1 minute, I'll open this. So this is where this slide we have seen yesterday, where we discussed that how the different licensing we can mix with other licensing. That is very important. So some of the license like a CC by ND and CC by NCND, these both are won't mix with. We cannot mix or revise. We cannot retweet with this these two licensing. Only we can distribute redistribute this document or the document which are licensed under the CC by NC and CC by ND. So other will have some limitation. The most accommodated licensing is a public domain, and after that followed by CC BY. So CC BY can be included in any type of any licensing one as long as we give the credit to the others. So this only CC by SA only. For example, if we have seen that the Orissa State Open University is comes under the material is comes under the CC by SA. So if any units which we are taking from this Orissa Open University, if you are identifying any unit from that course material, you can take it and then you can use it in the same licensing. And suppose if you want to add on remixing or something in that particular unit, then you can mix it. It is very well you can mix it. And you can also use it for commercial purpose. That is, we are using that unit we are giving to the student by getting the fees from the student. So that is also we are gaining money from that particular material. And if you are mixing with, the only condition is you have to give the credit to Orissa State Open University, followed by you have to give the same licensing to your new material. So that is important when you are taking with the CC by SA. So this we have yesterday also we have discussed. Then today what we are going to do is how to attribute. Yesterday we have seen some how to attribute and how to give the credit to the thing, and today also we will see how we can go with the how we can give the credit to the author and how to mention the referencing and all, how we can do it. So that is one of the important tasks today we will see. And also I will demonstrate how we can mix this in our text material, because we have seen how to credit in the image format and all. Yesterday also I have demonstrated you how to put all the things. And today also I will explain to you by using the text material how we can incorporate the OER content. So here, see, this is the one picture for e-content development. What are the components we have to consider? So this figure is created by me. So I have created, and using this all the one picture I have created for e-content development. This I placed in a public domain where OER creation, I mean contribute to the OER hub. So I have contributed this, and then I got this. I put it as a Creative Commons CC by SA 4.0. So whenever you want to give the credit to this particular page, if you want to take this and then you can put it in your content in this. This picture is free, then you can use it. So how to give the credit to the author? So one is the title of the picture, that is e-content development, and after that followed by the author name,
and is licensed under Creative Commons attribution Sarah Lake. So this content is available. When I press it, it will open. Let me open also. So this content is available here. When you are seeing this OER Commons S3, this place available, this content is. So we are getting this in this particular place. And this about the author and all, it will be. So what is the benefit of this picture? If you want to take this picture, is you can take, you can use, reuse. That means you can use it in your in your PPT or in your material. So second thing is you can modify, because this license allow you to modify this. For example, if I have put my department logo and also my university logo. If you want, you can remove it, and you can add one more component. Suppose if you are thinking that I can add one more component, that is also possible. You can add it, and you can give the rename or something extra, or otherwise you don't want this color, I want black and white, I will modify it accordingly. So it's free to modify this picture. And the new picture, that means new picture, new the content, you have to publish as a Sarah Lake 4.0. So that is the one. You have to give the credit to the author, and the same license you have to publish. So that is the example how to do attribute the component. This will explain to you. So if it is an image, then you have to give the image name followed by the author name and licensed under what are the things. So this is the title of the image and author name, and after that source where it is available, and then you can give the link. Sorry. And then what is the licensing in this particular thing. Similarly, if you are going for the course content, then what you have to do is you can give the course content name and the copyright where you have published in this. After that, the author name. So this is the author, that means the university, the Open Learning Initiative is the author name. Link is there, and then after that, this is a CC by NCSA. So that licensing you have to provide, that is a non-commercial Sarah Lake license is there. So like that, you have to give the credit to the author. And similarly, if it is a derivative, for derivative work, in the sense the same content, the earlier one, the same image now modified by somebody, because this is a CC by. So anybody can modify this figure. This figure, anybody can modify and give the new content. And here you see, this is derived. This means something modified. So this work is a derivative of this particular, and the licensing and the new licensing. So the title, original author, source, and licensing are noted. And after that, the derivative of new author's name also we can give to this particular licensing, because this is the original one. Then this is followed by the new author. So that also you have to mention. So both the thing you have to mention, the original author as well as the new author name. So how to give the citation? Suppose if you are taking the citation, OER citation material, how to place it in our research work, or in our work, in our course material, how we can cite the course content, that we will see here. So in this citation, for example, if you want to, if it is a citation for the ebook, then you have to write all the author name followed by year and where it is published, and it is the
it is available in this by this licensing. Similarly, this image, you have to give the author name and the year and the month if you want, and then the photo, the title of the image retrieved from Flickr, and it is a CC by 2 licensing. Similarly, the video component also you can provide the thing. So citation you can give like this, so that it will be both content inside citation as well as the in the reference also you can mention in the thing. So so in this I will finish it off. If you have any doubts, we can discuss. Then we can move further how we can place that. गुड मॉर्निंग मैम. मैम आवाज आ रही है? या मैम मैं डॉक्टर साधना श्रीवास्तव यूपीआरटीयू से. पहले थैंक यू मैम, बहुत ज्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिली इससे. और कल मैं प्रैक्टिस भी कर रही थी आपके ये CCY और जो लाइसेंसिंग के टाइप्स हैं. तो मैंने मैम कुछ स्टडी मटेरियल को सर्च किया था उड़ीसा वाले में, तो जिनमें मुझे वो टाइप 3 वाला मिला हुआ था, उसको मैंने ग्रुप पे डाला भी हुआ है व्हाट्सएप पे गोला बना के. तो जैसे वो एग्जांपल पूरा इंग्लिश में है मैम, और हमने एक चीज नोटिस की कि सारे कंटेंट्स जो मैंने आपका कोर्स भी इनरोल्ड किया है अभी माइक्रो लर्निंग वाला, बट मैक्सिमम कोर्सेज इंग्लिश में हैं. देयर आर ऑल कोर्सेज अवेलेबल इन इंग्लिश, बट स्टूडेंट्स नीड अ हिंदी लैंग्वेज मटेरियल और हिंदी कंटेंट्स. तो कैन आई कन्वर्ट द लैंग्वेज ऑफ दिस मटेरियल और नॉट, and what is the procedure? So I little bit confused this regarding this matter. Can you suggest me or guide me? Yeah, so you are taking the content from the Orissa State Open University, which is available under the CC by SA, and you are taking that content and you are revising. This is called as a revising. You are revising the content into the one language to another language. So you are revising the Hindi material to the English material to the Hindi material. It is very much possible. And after completing your work, then you have to give the credit to the Orissa Open University, and then you have to publish under the same license, that is CC by SA. Okay, thank you. In the credit page, you have to write it like this. This work is this is done by this and derived from Orissa State Open University under this topic name, and all the credit CC by SA and everything. Both you have to give. Thank you, ma'am. Thank you. Dr. Mathli, I have one question. Yes. If suppose I have to prepare an OER content, okay, sir. And my source, I have 3 sources. One source gives me the OER source in form of CC by. Another source give it to me by in under the license CC by SA, and third one is some other category. So after mixing all the 3 contents, what will be the new licensing terms and conditions for the developed content? What will be the third one, sir? Depends on the third one, you have to decide. You tell me that what will be the third one. Suppose it is CC by NCSA, and second one is CC by SA, and third first one is CC by. Okay. Suppose I have take some part from so first source. Let us take this table and then we will discuss. You are taking CC by SA. Okay, you are taking some material CC by SA and CC by SA, CC by SA, CC by and CC by NCSA. So when you are taking the CC by SA, you can mix with these 3 and you can declare as a thing. But when you are taking CC by NCSA, it won't go with these 2. You can mix with CC by and CC by NCSA.
You cannot mix with CC by SA because CC by SA is a commercial one. Here they are saying non-commercial. So these two licensing will not go together. Only you can go with CC by and CC by SA. Otherwise, CC by and CC by NC SA. So these two we cannot combine with us. Okay. Thank you. Okay. Anything else? Any discussion? Ma'am, can you provide these materials to us? Mail or something? Your presentations types of. This is the same presentation. Yesterday I have sent it the group. Same thing today also I am using. Yesterday this presentation I have sent it to you. Again, if you want, I will post it in, ma'am, the group. I just want to ask from organizers, but I'm not in that group. I have done registration earlier. I'm not there in the WhatsApp group. Okay, no problem. I will share the group link to this during this program. Okay, sir. Okay. So before I hand over this to Dr. Manas, I would like to demonstrate some more information which will be helpful for you. That how to incorporate some of the content which you can mix with the some component and creating the new content. So that I will demonstrate that one. Okay, so this is the content which is this is a basic Moodle is a one content we have created, one unit we have created, maybe a module. We can call it as a module. So this is having this all the things because I am not repeating what the Moodle LMS and how to install and all. This all are available in one document. See this document I have prepared, only I have inserted the objectives, but other thing I have taken as it is and little formatted, and after that lastly what I have done it, the reference I have given, this is using Moodle 2.0 edition of this. It is a Sarah-like and non-commercial. This is only for we are providing this material to the learners for the this type of workshop purpose only to understand the learning material. So I am not taking money from that the learners. So we have modified and placed it these documents instead of providing as it is. We have little bit more changes. That means only formatting according to ours, the unit number and all. It's a book format. We've taken one module and then we have placed it and then distributed to the learners. Similarly, another one, this one you can see. This one also we have placed the same thing, and then yeah, this is also same thing. So one more thing I want to tell you, this unit, this unit is about the technology used in education, where we talked about all the licensing and all the is, for example, what is OER, what is the licensing and all, plagiarism checking, open content, where we mentioned all the OER, Creative Commons, how, what is the attribution and all, everything we have discussed in this.
in this particular unit. Okay, so what we have done is, here in this unit we have because this unit is with our IGNO, and where we have not taken any OER policy in IGNO, we are not at using that one. Only thing is we are providing this OER material, I mean under the IGNO licensing. So we have mentioned only 1 or 2 OER material taken and place it here, which is only CC BY we have taken, because CC BY material, what CC BY what it says about is, you can use this material and then by only giving the credit to the author. So here we have placed, for example, this is a CC BY 4.0 material. So inside citation for this material, so we have given that this particular CC BY, the author name and year we have mentioned. At the end of the reference, we have given like this, for example. So this is the licensing where this particular name, and then the detail, entire detail followed by the Creative Commons CC BY under the CC BY. So like that, in the reference we have given the full reference where the CC BY licensing and all the information about that particular author, where it is published, and all the detail. But the inside we have only put it in the CC BY the Creative Commons. See, this information is, this is the author name. He is created by the CC BY. So we have mentioned there in that the CC BY only. So in this way you can use your the credit, how we can insert in our material, and how we can give the credit to the author. So earlier also I have mentioned that how to cite the content in our reference material, the citation. Because in earlier citation like APA 6 or 5 and all, the OER it's not came in, how to referencing style is not there. In APA 7, from 7 onwards they have mentioned that how to what is the APA 7 style for the OER content also they have mentioned. If you can go through the APA 7 style, or otherwise other 7th edition of the referencing edition, if you can go through, they have mentioned the OER content, how to reference, give the referencing to that is also there. So you have to follow accordingly to put the OER content properly. You have to give the attribution, you have to give the credit to the author, and then you can make use of the content. So this I want to share with you. And then what we can do is, so as I mentioned this, the OER contribution. So OER contribution, I want to give it to you.
Yeah, I will give you that link where you can contribute the OER content. So this is the thing I will. Okay, I may not able to find it out. Anyway, I will give you the link soon after. So what we will do is, before giving to the Dr. Manas, I want to give you some activity, so that that will be useful for you. So this activity is it's a free one. So you all of you know about cohort. It will allow you the 10 participants. The remaining participant can put it in the chat box. What will be the answer for this answer for that particular quiz? Then the remaining 10 participants can be participated in this quiz. Okay, so what I will share my screen. Okay, so what you all will do, what you will do, you go to the Kahoot.in. Okay, Kahoot.in. Sorry, KA. So this is a site, and then it will ask you the game, enter the PIN number. So once I open, you can enter the PIN number and participate. It allows you the 10 members. The remaining members, you can post the answer in the chat box. Okay, so that in this way we can participate. It has a 5 quiz. So let us see how you can participate in this particular quiz. Okay, so let me open that OER. This is related to OER. Okay. Okay, now so you type cohort.it. So I enter this game PIN number. Okay, so anybody can open in your mobile or in your desktop itself. Cohort.in, you have to type it like this, cohort.in. And then after that, this is a cohort.in. After that, you type this number. So the one person participant AG is participated. I mean, enter into this one. So anybody can, or otherwise, if you have a scanner, you can take the QR code and take also. So to join it, www.cohort.it, and you can join in and enter the PIN number. Okay, please try, so that I can start it. Please type cohort.it and enter the PIN number in your mobile or in your laptop. One participant participated, so I request others also to participate in this. Kahoot.in. Yeah, Sivani started. Abhinay. Rashmi.
Two, three more. Play Kahoot.in. Play. Play.Kahoot.in. Dr. Maithili, Yeah. you can, when we enter into this Kahoot.it, Yeah. Where you just right now there is a 3 participant. The participant name will come. Then I will start my quiz. I want 1 or 2 more to join. my question is, the game pin is provided by you, but if I have to create the game pin, how it is possible? No. Just you have to, you have to enter the game pin. This pin, No, 99333714. No, my question is, this game pin is generated by you, but if I want to generate this game pin, there is nothing in this website. Yeah. You have to create, means you have to create your own quizzes and all. So already I have created quiz. I'm asking you to join this quiz. The later I will tell you how to do. Okay, I already joined. Okay. When I join, it is so no sponsors. No, just you Cohort.it, you can join in this one. So let me start this one, and after that I will tell you how to do. So 4 members are participated, started. I go with this link. The answer is No, coming. you just type Cohort.it. Then it will ask you the pin number. Then just enter 99333714, and you will join. Okay, let me start the game so that the others can also view this one. So I will start the quiz. This is quiz on OER. So all the participants who have joined, please do this one. So you can, there is a 5 quiz. Okay. 933. The OER teaching learning research resource that reside in a public domain have been released under 993314. 2 members answer. Okay, the time over. So this is a true answer. Yes, because this shows that out of 2 members answered to this question. So let me do the next one is, so this is a scoreboard. Okay, next question. Which of the following list is include 5 hours of OER? Okay, so there is a one correct answer is this one: retain, reuse, revise, remix, and redistribute. One corrected, and then so let me see the result. So these are the points you are taking from this. Okay, let me move into the next quiz. Quiz 3. The question is this: most commonly used intellectual property license for OER that permit free use and repurpose is called?
So correct answer is Creative Commons. So blue color 2 answered. Let me check. So, okay. Next question, let us move into the next question, true or false question. Three members answered. Yeah, this is a correct answer. That is, OER enables you to search for OER across the discipline. Okay, the last one. Which or describe the activity of translating OER from one language to another? Okay, revise is the correct answer, because only revise only we allow you to do the one language, because you are revising the OER content to another format, I mean another language and all. So Rekha Singh, third position Reshmi, and the first one is AG. Who's AG? Asutosh Gupta, I think. Yeah, that's good. Okay, let me stop it. So this is the way you can use this for our classroom, because nowadays we are going through the online classes. So this type of quizzes alert the student that to participate, or otherwise revise the content, whatever you have last class, what you have taught, that you using this type of quiz you can revise, and then you can get the student alert. This will be the good quiz, online assessment, or using Quahert as one of the, yeah, it's not a free tool. It is a they have basic for minimum thing they are given as a free, so that we can make use. If you want to more intensive quiz and then you have to pay for it. So I'll stop sharing here. Yeah, so that's so any doubt on it before move on to further? So if you have anything to ask me, or anything you want to discuss in this particular aspect, or I mean giving the credit, how to take it up, mix it up with that one and put it in our content. If you have anything, then we can discuss, and otherwise I will hand over to Dr. Manas. Come back. Good morning, everyone. You have any question and query so far? So we can take up a few things, then we can discuss about open educational resource series,
U.P.Rajarshi Open University adopted. Any query or questions relating to this 2 days? Of video because of bandwidth. Yeah, please. Any query? ये कोई डाउट हो related to this open educational resources and किसी भी तरह का आपके जहन में कुछ ऐसी कोई बात हो कि जो कि ऐसा लगा है कि ये ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस, इसकी क्या जरूरत है, क्यों है, क्या हम ये सारे चीज पहले प्रैक्टिस नहीं करते थे, जो अभी ये एक नया चीज हमें करना पड़ेगा बीइंग ए टीचर एंड एकेडेमिया। हो सकता है मेरा ये प्रश्न है आपके लिए, आप में से कोई बता सकता है मुझे कि क्यों चाहिए अभी ये चीज, इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, या आपके स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट होगा, या आपके सोसाइटी को क्या बेनिफिट होगा अगर हम क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस मटेरियल्स को यूज करते हैं एंड उसको यूज करके मटेरियल डेवलप करते हैं, फिर इसको शेयर करते हैं। तो कोई भी ये प्रश्न का उत्तर कोई भी दे सकते हैं, प्लीज ऑन कीजिए आपको। और या प्लीज गुड प्लीज। मॉर्निंग सर। जी आवाज है सर, मैं साधना बोल रही हूँ यूपीआरटीयू से, डॉक्टर साधना। साधना मैडम बताइए। जी 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 सर, इस तरीके के कोर्सेज काफी यूजफुल हैं, क्योंकि हमने जो देखा कि हम लोग पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन इस सिस्टम में रह के टाइम की प्रॉब्लम हो जाती है कि छुट्टियों की या बहुत सारी चीजों में। तो इस तरीके के कोर्सेज से हम लोगों को काफी नॉलेज मिलती है एज ए फैकल्टी, और फिर उस नॉलेज का यूज हम लोग स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। इवन आपस में भी जो हम लोग रिसर्च पेपर लिखते हैं या कुछ चीजें करते हैं, जैसे अभी सर मैं एक स्वयं का कोर्स भी कर रही हूँ फोटोग्राफी का, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं छुट्टी लेके बाहर जा पाऊं, बट आपके कोर्सेज या कल भी मैंने माइक्रो लर्निंग का कोर्सेज ज्वाइन किया, तो इतने सारे नए डायमेंशन सीखने को लग रहा है ओ माय गॉड, पूरी दुनिया नहीं पड़ी, अभी तो बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ बताना है। तो एक जिज्ञासा आती है और उस जिज्ञासा के साथ में ही नॉलेज भी आती है। तो सर ये बहुत यूजफुल है आज के टाइम के लिए, बिकॉज इतना टफ टाइम चल रहा है कि हमें 24/7 में से टाइम मैनेज करना पड़ता है। तो वर्किंग के साथ अगर हम लोग ये सब कर पाते हैं तो सर बहुत उपयोगी फील हो रहा है मुझे तो सर इसको करके। Thank you very much, श्रीवास्तव मैडम। प्लीज एनी अदर। मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देता हूं मेरा प्रश्न ये है यहाँ पे, ये जो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसिंग की बात हम दो दिन से कर रहे हैं, जिसको हम ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस कहते हैं, ये पूरे सत्र में जितना भी हमने सीखा है, उसका जो आउटपुट यूज आप करेंगे, या आप अपना कंटेंट एंड मटेरियल को जब क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के तहत रिलीज करेंगे, उससे आपको क्या लगता है कि ये जरूरी है, या पहले जो आप करते थे वो सही था और ये इसमें से ये सही है? अगर ये सही है तो इससे आपको क्या लगता है कि इससे बेनिफिट क्या होगा? सर मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी अपने जवाब को। प्लीज साधना जी प्लीज। जी 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 सर, मुझे लगता है ये बहुत बेनिफिट होगा। जैसे मैं पिछले 2-3 सालों से इसके मैं अपने लेवल से समझने और सीखने की कोशिश कर रही थी कि मूक क्या है, ये सारी चीजें क्या है। तो मैक्सिमम ऑल मटेरियल अवेलेबल आर इंग्लिश, but I know all the problems ki how to convert and what is the basic problem Hindi medium students. So I feel that this type of course and workshop are very useful for us, because I am able to convert the language and translation. So I think India needs to information share and knowledge share.
So translation work, information work, and sharing work are also in the world level. It is very important to convert and knowledge share. So I think this workshop is very useful for us. And at least we are open to new society and new era of the knowledge. So this is very beneficial and useful for us, sir. And Absolutely. also our students is also, because if we are not, we will improve, then how will we get knowledge and to circulate the knowledge with the students? So this type of workshop is very useful for us. Or also this type of Creative Commons and forum is also important for everyone, just like teacher, student, everyone important for this type of workshop, sir. I feel that. Thank you very much. It means what you are saying, that through Creative Commons licensing, you can release your content for wider sharing. Number one. Number two, you can able to increase the access to this material, as well as through this, your learners and the users, they can able to use these materials freely and fairly. So this is very good. And good point is here the language, because many open educational resources materials are available in English and other colonial languages, but Hindi and other regional languages is lagging behind. So teachers like you, if can engage within the mandate of this licensing structure, and using open educational resources converted into the regional languages, and releasing under the specific similar licensing, which can increase the access to the stakeholders and the learners. This is very good thought. Any one of you can supplement the things, or something, some idea you have? Any one of you? Sir, myself, Dr. Rashmi Bishnoi from Lucknow. सर ये जो वर्कशॉप है, इससे बहुत अच्छा हम लोग को फायदा ये हुआ कि लाइसेंसिंग के बारे में जो अभी तक हम लोग को नहीं पता थी चीजें, वो पता चली कि हम कौन सा मटेरियल हम ऑनलाइन हम यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई करके। जो डॉक्टर मैथिली ने जो भी बताया वो सब बहुत यूजफुल रहेगा। आई थिंक हम लोग को फर्दर, क्योंकि ऑनलाइन मोड में सब काम करने हैं, और आगे चल के जो हम लोग डेवलप करना चाहें अगर अपना कोई मटेरियल, तो अभी तक एक हिच थी कि कैसे हम किसी दूसरे के काम को हम पब्लिश करा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो इट वाज वेरी क्लियर नाउ कि कौन से लाइसेंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं और उसको कैसे हम क्रेडिट दे सकते हैं। तो थैंक यू ऑल फॉर दिस वंडरफुल वर्कशॉप। थैंक यू सो मच। थैंक Rashmi ji, thank you very much. And okay, I'm waiting for any more people need to be participate. Hello, good morning, sir. This is Rekha Tripathi, regional coordinator from Jhansi. Hello. Yeah. Yes, ma'am. Rekha madam, please. Sir, thank you so much. Thank you Simka, and thank you Mathili ma'am. कि हम लोग सच में बहुत ज्यादा नोन नहीं थे इन सब चीजों से कि व्हाट इज CC by SA NCND, एंड कैसे किसी को क्रेडिट देकर हम अपना उनका कंटेंट यूज कर सकते हैं। क्रेडिट के बारे में बिल्कुल सच तो यही है कि वेरी फ्रैंक कि मुझे इसका नॉलेज नहीं था इतना। हाँ, हम कोई कंटेंट खोलते थे और जो हम उसको हमारे लिए जो कॉपी कर सकते थे तो वो ले लेते थे, अदरवाइज अगर नहीं कर उसमें कॉपीराइट है नहीं हो सकता तो हम दूसरी साइट खोल लेते थे। बट इस सेमिनार के बाद से ये हुआ कि हाँ, हमें इस डीप नॉलेज जो मिली कि हम इससे बहुत सारी कंटेंट कैसे ले सकते जो नहीं ले पा रहे थे, कि किसको क्रेडिट देके हम इनका कंटेंट ले सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं अपने के लिए, और हम अपना जो कंटेंट डालते हैं कि वो सभी लोग कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके उसका मिसयूज कर ले, तो कॉपीराइट और लाइसेंसिंग की जो नॉलेज हम लोगों को मिली वो बहुत अच्छा रहा। 2 दिन का हमारा सेशन, कहीं कहीं बीच में डिस्कनेक्ट हुआ, बट मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये सेमिनार हुआ। और साथ में ये कि मैं चाहूंगी कि आगे भी टाइम टू टाइम ऐसे
कार्यक्रम होते रहें, सेमिनार्स हम लोग को अटेंड करने को मिले, जिससे हमारा नॉलेज और इनहेंस हो। सो थैंक यू सो मच सर। हेलो हेलो जी आप यस यस हेलो, प्लीज मैं प्रोफेसर रुचि वाजपेयी, Yes, आचार्य yes. हिंदी मानविकी विद्या शाखा इसी विश्वविद्यालय से। मुझे एक बात जो और समझ में आ रही है सर, वो ये है कि जैसे हम लोगों की जो मुद्रित स्वाध्ययन सामग्री होती है, तो मुद्रण की प्रक्रिया में या उसको बनाने में जितना समय लगता है, तो उस बीच में अगर मान लीजिए आधा मटेरियल बन गया और आधे में क्रय पुस्तक लगाने की बजाय हम लोग इन रिसोर्सेज से काम ले सकते हैं, ये एक और महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है कि बिंदु है इसमें, जो अब तक बोला नहीं गया था। यही कहना था। धन्यवाद। और Absolutely, absolutely, you are right. बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को और विश्वविद्यालय प्रशासन को भी धन्यवाद सर। Thank you. Hello. Thank you. Hello. Actually, you are two things you point out. One is it saves a lot of time. Number one, to produce any self-learning skill for the university. And another one is you are telling that getting access to the content. Third one is the money. That is economically it very easy. Us referring or materials need to spend a lot of money to get get it was disconnected. I think there is a network problem at your side. Yeah. Now it is okay. So absolutely that saving lot of time, and another one is the money. Hello, Dr. Manas. Hello, Mr. Yes, Manas. Yeah, he is having some network issue. Maybe he will come. Okay. Yes, Madhuman is there. Is there? Yes. Hello, Dr. Manas. I'm Seema Singh here. Madam, please. हाँ, मैं बस ये जानना चाहती थी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, कि जो हमारे ऑलरेडी प्रिंटेड मटेरियल्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं, क्या उसको हम लाइसेंसिंग अब इस लेवल पे कर सकते हैं? जैसे जो हमारे SLMs हैं वो ऑलरेडी प्रिंट हो चुके हैं और चल रहे हैं बहुत दिनों से, क्या अब हेलो कुछ होते हैं ये होगा जब पॉलिसी उस कमिटी फॉर्म करके देन कंटेंट को आप लाइसेंस अलोकेट कर सकते हैं एंड क्रेडिट पेज चेंज कर सकते हैं. So it will be very much beneficial for your stakeholders and learners. Okay. मानस, आपका इंटरनेट शायद you have some problem, तो थोड़ा सा रिपीट कर दें आप अगर इसको, क्योंकि क्वेश्चन को, क्योंकि आपका ब्रेक हो रहा था. Absolutely. Sure, ma'am. ये जितने भी कंटेंट्स आपका हुआ है और वो भी होगा सॉफ्ट कॉपी भी पास, तो वो कंटेंट आते हैं कि उसको आपका करंट लाइसेंस अडॉप्ट करके उसको रिलीज OER पॉलिसी. सो वो चीज आप बेशक कर सकते हैं, लेकिन उसका ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी डिसीजन. So within that policy,
एक्चुअली मानस का आज बहुत ज्यादा ये इंटरनेट इशू आ रहा है, सो लेट मी आई विल जस्ट टॉक टू हिम एंड लेट्स सी कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है. Okay, thank you, madam. Thank you. Yes, Thank you, ma'am. I'm back now. मैडम वेरी सिंपल, आप इसको कर सकते हैं, एक सेंटेंस में अगर बताऊं, इसको कर सकते हैं विद इन योर मैंडेट ऑफ योर ओईआर पॉलिसी. एंड उसके लिए एक ओईआर कमिटी भी आपका बना हुआ होगा आज पर योर पॉलिसी स्टेटमेंट. एक कमिटी बना के उस कमिटी में ऑल कंटेंट एक्सपर्ट्स एंड द कॉन्ट्रैक्टर्स, दोज हु आर फ्रॉम द कोर्स क्वार्टर्स, they can be together, and through that you can pass in through and allocate the licenses to the contents. And next start of meeting you can revise your credit base Creative Commons license. Okay, thank you. Yes, thank you. Ma'am, I want to add on only one line in this one. I agree with Phyllis, agree with Dr. Manas, what he said it. That should be because it's already published in our published material. So you want to revise and to put it in the OER content. As Manas said that you have to create a one committee to look of the subject matter expert, that is subject matter expert committee will look into the all the scan to the all the content, whether you have any copyright material. Suppose we used to take some copyright permission. Suppose मेरे को ये फिगर अच्छा लग रहा है, उस फिगर को मैं मेरा मटेरियल में इंक्लूड करना चाह रही हूँ, देन मैं उसी ऑथर से कॉपीराइट परमिशन लेके रखा होगा, तो उसने अग्री किया होगा, उसको भी हम लेके जाना है, बिकॉज दैट इज अ थर्ड पार्टी मटेरियल. उनको सॉल्व करते हुए आप न्यू पॉलिसी के हिसाब से आप OER को रिलीज कर सकते हैं. सो ओनली थिंग इज दैट वी हैव टू सी इफ इट शुड नॉट बी थर्ड पार्टी मटेरियल. Okay, thank you, Mathli. So any other any query? तीन चीजें उभर के आया है. हम 2 दिन के जो डिस्कशंस हमने किया है, दोनों दिन के डिस्कशंस में 3 चीज उभर के आया है. एक तो चीज है कि आपका यूनिवर्सिटी और बीइंग एन इंडिविजुअल, आप जब ओपन एजुकेशनल रिसोर्स प्रैक्टिस करते हैं, उस केस में एक तो चीज है कि आपका कंटेंट का एक्सेस डेवलप होता है. मीन्स लोग आपके कंटेंट को वेरी इजीली पहुंच पाते हैं कंटेंट तक, नंबर 1. नंबर 2, आपका समय बहुत बच जाता है अगर ओपन एजुकेशनल रिसोर्स मटेरियल्स को लेके आप अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज करते हैं, नंबर 1. नंबर 2, अगर कोई मटेरियल आप खुद डेवलप करते हैं एग्जिस्टिंग ओपन एजुकेशनल रिसोर्स मटेरियल्स को लेके, तो फिर आपका समय का बचत हो जाता है. थर्ड वन इज, जब ऑलरेडी ओपन एजुकेशनल रिसोर्स मटेरियल्स अवेलेबल है फ्रीली एंड विद इन द क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस आपको वो प्रावधान देता है कि आप इसमें रिवाइज भी कर सकते हैं, रिमिक्स भी कर सकते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. तो उस केस में आप उस मटेरियल्स का यूज करते हुए अपना खुद की सोच को उसके साथ जोड़ते हुए आप अपना कंटेंट डेवलप कर सकते हैं. तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका फाइनेंशियल जो इकोनॉमिकल कंडीशन भी आपको इसमें बेनिफिशियल रहता है. तो 3 चीजें आपका ओपन एजुकेशनल रिसोर्स यूज करने से आपका बेनिफिट रहता है, नॉट ओनली जस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो फॉर इंडिविजुअल बीइंग ए टीचर एंड स्टूडेंट के लिए भी. क्योंकि जब मटेरियल्स आप उनको ओपनली शेयर करते हैं, उनके डोर स्टेप तक पहुंचा देते हैं, तो उनके लिए भी इजी हो जाता है उन मटेरियल्स का यूज करना और उसको फेयर यूज करना. नंबर 1 इज द फेयर यूज करना इस मटेरियल्स को, एंड एट द सेम टाइम आपको पूरी तरह से क्रेडिट देना, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत एप्रोप्रिएट एडिक्वेट एथिक्स के अंदर मटेरियल्स को यूज करना, उसका प्रावधान मिलता है. एंड बीइंग ए ऑथर, बीइंग ए क्रिएटर, बीइंग ए यूजर
you are enjoying without taking any kind of tension of copyright violation. So ये सारे अच्छाइयां हैं. इसके साथ साथ कुछ चीजें हैं जो कि हमें अच्छे से ध्यान रखना है. कोई भी मटेरियल्स वो कॉपीराइटेड है प्लस आपका ये क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के तहत रिलीज्ड है, आपको क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस को समझना है, उसी के तहत उसको यूज करनी है. दैट इज ऑलवेज वी आर टॉकिंग अबाउट द फेयर यूज. दैट इज ओनली द फेयर यूज जो आपका क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में प्रावधान है, उसी लाइसेंस के दायरे में रहते हुए उस मटेरियल्स का यूज करना है. तो बस सिंपल इतनी सी बात है. इस चीज को जितना हम थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, देन we will get lot of benefit out of this. And being a teacher, particularly I always believe that being a teacher role is that to facilitate our learners in their learning. So जो भी उसके लिए सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स and learning resources in any format, in any form. So this will be very much helpful. I was just going through your open educational resource policy of the university, and that I believe the policy need to be revised, because in 2016 policy was adopted, and the policy need to this is the time to revise, because many things has been revision come into the picture last 2-3 years, particularly in relation to open educational resources and open educational practices. So your policy, I was just looking into, it doesn't say any specific licensing or any one or two specific licensing, which is need to be added into your policy. And again, I can say within your policy mandate, there is a provision of constitution of OER cell and OER committee. That committee need to sit together and make all these changes in the policy document. And after that, within your organizational structure, it will go for the adoption. So adoption, it means approval of the senior management or your syndicate or your academic council or your executive council, etc. So this is required for this policy is concerned right now. So I believe Simca is in a position that help you in this regard also, just making changes of the these licensing things after discussing with you. And in Simca's opinion, that if you want to make better access to your materials, as per Professor Seema Singh, Honorable Vice Chancellor of the university, you should go for the Creative Commons license. There are two major license. One is Creative Commons by SA, means CC BY SA, and second licensing is CC BY, which is more open license and giving you opportunity to the organization to provide high access to their content, number one. Number two, more use of content, open use of content. Sometimes people are thinking that it may be leading to the misuse of the content, but being a OEP practitioner or open educational resource practitioner, I would like to suggest that it allows you to more fair use of
materials rather than the misuse of your materials. It will go for the more open licensing, because see, teachers always take responsibility what they are writing and what they are releasing under that. And again, if you want to maintain the quality, Simca come out with quality guidelines that is called tips framework, which is available in our website itself under book section. So this quality framework can be used and refer while you are using your OER materials, number one. Number two, while you are creating your OER materials also, these guidelines you can refer, which can help you to maintain the ethicality, number one, and increasing of your access to your materials, number two. Number three, how technologically these materials are reaching to the last mile of your resources or the stakeholders. So all these are there in the different guideline form, and you can use these guidelines. At the same time, using this same toolkit, you can get assess the materials which is the better for your use, and how you can use within the entertaining yourself within the this 5R system. So the quality of open educational resources also can be measured, and that you can measure using these parameters under Creative Commons licensing. And I just wanted to share with you one point here. You can create your own institutional guidelines as well. And this guideline, which is Simca developed for quality open educational resource materials. So these guidelines, using these guidelines, you can take few parameters to justify your contents, your materials, which can be released under open educational resource and under Creative Commons, which is adopted under your policy. So I think this two things we are talking here. One is the individual, as Manas, as Ashutosh ji, as Maithili, etc. And another one is the institutional. Another one, the institutional. And institutional is within the mandate of your vision, mission of your, where your policy is stated forth. And what policy is looking into within the overarched within the objectives of the policy talking about. I wanted to share here your policy document. I have that policy document with me. Thanks to Professor Ashutosh Gupta, he shared with me that policy document. Let me just share with you that policy one, and just an example I wanted to show you. Just 1 minute time you can give me so that I can able to share with you. And this is your policy document. Are you able to see this document? Anyone can confirm? Yes, sir. Yes, it is visible. Yeah. So just I will read for you. It is small, maybe you are unable to read this. See, your policy is talking about your preamble. It means it is talking about your organizational structure and what organization believe in, and why open educational resource is. Then after that, these are the objectives of your university.
what meant for your organization, your university is. Then these are the mission statements as per your university is concerned. And policy also talking about the various key words which is used in the policy document, that which is your university and translate what you are implementing the policy in your university. And this is the policy of your university. This is the major declaration talking about your policy. What is talking about your policy? Your policy is talking about implement the creation, reuse, remix, repurpose, and redistribution of open resources within an open licensing framework and other terms and conditions as laid down by the university time to time. So it is very clear that university wants to create materials, reuse materials, revise and remix to produce the new materials, and wants to share these materials, which is called as open educational resources as per the definition which is agreed, and use adopted licensing. Within that licensing framework, it need to be used, number one. Number two, again, through this policy declaration, it is agreed by this university that the materials which is available under certain open licenses, for example, Creative Commons licenses, which is adopted or adapted by the university, it will be give the adequate respect to that license, and within that license, it extend their ethicality to the author as well as to the creator or the publisher. So within this declaration, there are some specific policy statements has been made. One of the policy statement I can just wanted to read for you for just to understand only. The guidelines as laid down by the university for preparing print excellence and e-content shall be considered. Another one is talking at the same time, any changes occurred during development, excellence, and e-content shall be equally applicable to OER policy. The university shall publish the open educational resource through its website with appropriate disclaimer, that is kind of OER license. Means what open educational resource license you adopted within the agreement of your policy, you will state this license in your self-learning materials appropriately and adequately. For example, yesterday we Maithili showed I don't know what is happening today. Lost my connection again. So friends, I'm just I was there in that how your policy looks like, and if you remember, I have shared this policy in the WhatsApp group itself document. So you can have a look to this policy,
And let me show you. I will take only 5 minutes of time so that I can able to show you. Are you able to see this my screen? Hello. Are you able to see my screen? Yeah. Yes. Thank you, Ashutosh. Thank you. So, my friends, you can see the policy objectives are here. What you want to achieve through these policies. And the policy also here, the strategic outputs and areas of policy. And here my concern is policy wants to declare here about the licensing. I was wondering this policy document that which policy is adopted. This policy is adopted by the university. That university need to decide. Henceforth, university speak within their authorities and decide that which Creative Commons license and which are Creative Commons license need to be placed under this policy. And very good is that the policy talking about open educational resource repository should be available at university, and all through Creative Commons attribution should be placed in that open educational resource repository. And we will wider access to their learners, to their stakeholders, to the community, and it is not restricted to just the state of Uttar Pradesh. It is open for all galaxy. So, see, my dear friends, talking about copyright things, and sometimes looking into these things, a point is coming to first. If it is open educational resource material, then is it copyleft or copyright free? Being a OER practitioner, I would like to share with you, with due all responsibility, it is not at all copyleft, not at all copyright free. All materials which is written or shared by the X and Y or Z, that is copyrighted to that creator. The open licenses are that adding value to fair use of copyrighted materials. So, one question coming to my mind, I will start probing this question to listen from you. Thoughts are copyrighted or not? Thoughts are copyrighted or not? Anyone can answer. जो आप सोचते हैं
वो कॉपीराइटेड है या नहीं? रश्मि जी प्लीज। सर जब तक उनको पब्लिश नहीं करा रहे तब तक तो कॉपीराइट नहीं है, लेकिन जो हम सोच रहे हैं वो कॉपीराइट कैसे हो जाएगा जब तक हम बताएंगे नहीं उसको। Absolutely right. It means I just asked this question to check myself I am in right track or not, I am reaching to you or not. You are absolutely right that thoughts are not at all copyright unless of until you are sharing with someone. It's that sharing, verbal sharing or non-verbal sharing. So it should be written, it should be shared through some medium, some mode. So then only that will be called as copyrighted. So by default, whether you are marking copyright or not, which is your materials you are sharing with XYZ, that is copyrighted. So this is when it is become copyrighted, it is coming under automatically to your intellectual property right. So under this intellectual property right, that is again question comes to that how we can use fairly, giving adequate attribution to the creator and author. Here vital role plays by open educational resources and open licenses. These open licenses, which is called as open educational resources, that is making us to fair use of the materials which is copyrighted and created by the author. So this policy of open educational resource policy of the university is adequately and appropriately stating and giving the adequate guidelines to the entire fraternity of the university and stakeholders of the university to use their own materials and adapt existing open educational resource materials which is released under certain Creative Commons licenses. So your policy, the university policy, also talking about the how to maintain and manage quality assurance and how frequently your materials will be reviewed time to time to add values and to improve the quality of your resources and materials. So the entire process is stated forth here, and for review, and I'm coming to Honorable Vice Chancellor's question, your policy is adequately, appropriately stating here the clause of 7.0 of 7.5. Very simple. You can create that OER cell, or otherwise you can have a committee. That committee consisted with Vice Chancellor, Director of Schools, internal academicians, and one or two external subject experts nominated by the Vice Chancellor, SLM, self-learning material in charge, and ICT in charge. So these within your policy mandate, these are need to be constituted, and time to time this team will sit together and take decisions whenever it is required and adequately, appropriately to adapt the materials which is developed under the university and using university funds and budgets. This is also talking about your liabilities and how materials should be released. It is talking about copyright here, and the statement declaration should be logo as well as the Creative Commons license icon or of the Creative Commons in the credit page or otherwise in the application of the document or the.
And these here role and responsibilities of the teachers, content developers, and faculty members, IT professionals, and library staff, etc., etc. And the different arrangements for the institutional is stated, especially to responsibilities of the ICT cell and publication division or content management division, etc. So this is friends, about your means Uttarakhand, sorry, U.P.Rajarshi Tandon Open University policy is concerned, and I wish U.P.Rajarshi Tandon Open University will revisit to their policy within the structure, and Simca will be happy with the due permission of the Madhuparar. Simca will be happy to assist you in this regard. So with these words, thank you very much. Any question, any queries? And now open for the discussion. Over to Asutosh ji. Sir, please unmute. Thank you, Dr. Manas. Now I would like to request all the participants, if they have some questions or queries regarding the 3 days workshop, they may ask. Hello. Give some feedback about the workshop. A feedback form is sent to you your link to the WhatsApp group as well as to this meeting link also. All are requested to fill their feedback about the workshops, what you like and what you dislike, what are your suggestions for future improvements. Now I would like to request all the participants to प्रदीप आप कुछ पूछना चाहते हैं? प्रदीप जी आप कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। जी मैडम, मेरी एक क्यूरियोसिटी है, केवल क्यूरियोसिटी ये है कि जो मैंने अभी तक सीखा है इस वर्कशॉप से, उसमें SLM के 3 फॉर्म पॉसिबल हो सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और प्रिंट, in the form of audio video lectures, and in the form of sign language. So what is the scope in OER in the form of audio visual lecture material and sign language material also? Only I want curious about these things. Thank you. Okay, Maithili or Manas, anyone wants to respond? Thank you very much, Pradeep ji. Maithili, please. Thank you very much. This question, see, as far as the audio video concerned, so definitely we can declare that audio video content as a OER. As we already mentioned that some of the videos which are available on the YouTube, they have mentioned that is a OER content. Some audio clips also available, which is comes under the OER content also. So apart from that, if you can see in the Orissa State Open University and other university, Uttarakhand University, they also putting their, apart from the SLM content, they also uploading their video audio content as a OER also. There also they are following the same policy, and they are declaring their video audio content as a OER content also. That also possible. As far as the sign language is concerned, still now I'm not come across the sign language OER content. This is it's a very good initiative. You can convert your content into the OER content. It will be very much beneficial for the society and community also, because it's a very good thought that we have not think about towards the sign language.
So anything modification, so this is also comes under revised material. So all the content which is available on OER or this, we can convert that into the sign language and release under the revising the content into this. How we are revising the English material based on a written in English content revised into Hindi medium and other medium. Similarly, we can do it for sign language also. Thank you. Thank you, madam. Thank you. हाँ जी, मिस्टर प्रदीप, मैं अगर कुछ जो डॉक्टर मैथिली ने कहा है उस पे ऐड कर दूं। आपका तीन जो रिसोर्सेज थे, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, आपने उसके बारे में पूछा। एक तो था कि प्रिंट टेक्स्ट मटेरियल। प्रिंट टेक्स्ट मटेरियल डॉक्टर मैथिली ने बहुत एक अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आप उसको कैसे OER प्रिंट टेक्स्ट मटेरियल आप कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड आई होप आप में से बहुत ने आइडेंटिफाई भी किया होगा, उसको प्रैक्टिस किया होगा। तो बहुत मटेरियल है हमारे पास जो OER है, टेक्स्ट मटेरियल है, जो वेब पे पढ़ा, इंटरनेट जो हम वेब कहते हैं उसमें पढ़ा है, या ओपन यूनिवर्सिटीज का जो लर्निंग मटेरियल है वो है। दूसरा जो आपने प्रश्न किया, लर्निंग रिसोर्स एज वेदर इट इज इन ऑडियो और इट्स इन वीडियो, डॉक्टर मैथिली ने वो भी हमको बताया कि आप एक OER वीडियो को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। गूगल एडवांस सर्च में जाके आप वीडियो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो भी आपको बताया। विद इन दैट वीडियो ऑल्सो, अगर वो पूरा OER है तो आप वो पूरा वीडियो ले सकते हैं, या उसमें से कुछ पोर्शन 3 मिनट का, 5 मिनट का आप उसमें से उठा के अपना एक नया वीडियो बना सकते हैं। तो वो एक दूसरा हो गया। तीसरा जो आपने प्रश्न पूछा था कि साइन लैंग्वेज, हाँ हमारे पास OER इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर अभी हमारे पास नहीं बना है, पर कंट्रीज लाइक मलेशिया, they have already developed an OER repository which is exclusively for on inclusive education. तो साइन लैंग्वेज में है तो कोई अगर बना सकता है साइन लैंग्वेज की, साइन लैंग्वेज एक्चुअली इज वन पार्ट ऑफ इट। आप साइन लैंग्वेज किसके लिए बना रहे हैं? फॉर द human beings or individuals who cannot hear or who cannot listen, तो साइन लैंग्वेज में आपका होएगा। तो उसके लिए आप कैसा मटेरियल बनाएंगे वो आपको देखना है कि उसको रेपोजिटरी में कैसे डालेंगे। हिंदुस्तान में अभी हमारे पास ऐसा नहीं है, but countries like Malaysia has gone far ahead, and the Ministry of Education Malaysia, they have developed already. तो मेरा सिर्फ यहाँ पे ये कहना था जो डॉक्टर मैथिली ने बताया, और I just wanted to add that. एक बीच में प्रश्न आया था कि हिंदी में कैसे करेंगे। पूनम ने शायद पूछा था कि हिंदी में हाँ अभी बहुत मुश्किल है, हमारे पास OER नहीं है, हमारे पास होगा, पर जिसने हिंदी में, सपोज मैंने एक अपना रिसर्च आर्टिकल हिंदी में लिखा और उसको पब्लिश किया, या जैसे यूपी-राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी का जो लर्निंग मटेरियल है वो सारा हिंदी में है, मोस्टली मेजॉरिटी अगर हिंदी में है, हमने उसको OER कर दिया, तो योर्स इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो आपको मटेरियल बाकी लोगों को हिंदी में मिल जाएगा, एंड दैट इज अंडर OER। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमने फर्स्ट डे भी बात की थी कि हिंदी में अभी OER मटेरियल जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है, and it will be very good initiative, and SEMCA can support and will support U.P.Rajarshi Tandon Open University if they want to have a repository on their website. अपनी वेबसाइट पे बनाएं, SEMCA की वेबसाइट पे होस्ट मत करें, पर हम आपको जरूर मदद करेंगे कि आप अपनी वेबसाइट पे हिंदी का जितना भी मटेरियल है विच इज अंडर OER, अगर आप उसको होस्ट कर दें और एक वो रेपोजिटरी बना लें, बहुत बच्चों को, बहुत स्टूडेंट्स को, बहुत टीचर्स को फायदा होगा। नॉट ओनली यूपी के,
हमारे पास राजस्थान है पूरा, हमारे पास पूरा बिहार है, हमारे पास पूरा झारखंड है हमारे पास। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो हिंदी के, एक्सेप्ट साउथ जो रीजन है, साउथ ऑफ इंडिया है, इन सब में हम स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा। तो इफ आई रिक्वेस्ट प्रोफेसर सीमा सिंह, इफ all of you, if you are ready to do that, we will support you and we will see how we plan this and have a repository on U.P.Rajarshi Tandon Open University website, और हम सारा हिंदी का OER का मटेरियल जो है हम उस repository में डाल दें। यस, थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा आइडिया है। वी विल बी देयर, हम लोग सब लोग मिलकर ये काम करेंगे। और एक जो साइन लैंग्वेज के बारे में बात हो रही थी मैडम, मैं अगर कुछ कहना चाहूँ तो मुझे लगता है कि जो साइन लैंग्वेज के जो बनेंगे वो वीडियो फॉर्म में ही बनेंगे, एंड वीडियो ऑलरेडी OER में हम दे सकते हैं। उसके लिए कुछ हमें स्पेशल ट्रीटमेंट की शायद जरूरत ना हो, क्योंकि वो साइन लैंग्वेज वो है, उसका वीडियो फॉर्म में ही हम उस साइन लैंग्वेज के थ्रू अपने कंटेंट को डिलीवर कर रहे हैं। तो द चाइल्ड कैन सी द वीडियो एंड ही और शी कैन यूज इट। हाँ बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइन लैंग्वेज जिसको आता है वो वीडियो उसमें बना सकता है। तो जैसे उसमें वॉइस अगर है, हर वीडियो में वॉइस होती है, पर एक जैसे हम न्यूज देखते हैं जब हम, तो पीछे एक साइन लैंग्वेज वाला भी उस न्यूज को विद साइन लैंग्वेज बताता है। सो दैट विल आल्सो a very good idea if your university can convert those videos into sign language. I think that will be a great initiative the university can take, and SEMCA is ready to support. Okay, thank you. और कोई प्रश्न? मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है सबके साथ, और वो वाला जो चीज है वो मेरे ऊपर जो मैं काम करती हूँ उसके ऊपर भी अप्लाई करता है। इट इज नॉट कि मैं सिर्फ एक प्रवचन करूंगी या बताऊंगी। जब तक हम ये खुद करेंगे नहीं, अपने आप जब तक हम कोई काम नहीं करेंगे, हमने सुन लिया डॉक्टर मैथिली का लेक्चर या मानस का लेक्चर या किसी का भी लेक्चर, बाकी के प्रोग्राम्स में भी, जब तक हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे नहीं, हम सीख नहीं पाएंगे। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दिस 3 days, 3 दिनों के बाद जब आप अपने सीट पे जाएं, ऑफिस टाइम के बाद अगर आप काम करें, डू एक्सप्लोर कि व्हाट आर द लाइसेंसेस, कौन कौन सा मटेरियल OER में है, वो कौन से लाइसेंसेस हैं, और उन लाइसेंसेस को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट विल बी ए लर्निंग, एंड दैट विल बी ए सस्टेनेबल लर्निंग जिसको हम कहते हैं, नॉट ए फ्रेजाइल लर्निंग। Any other question, or otherwise we'll see the closure. थैंक यू प्रोफेसर मधु। लग रहा है आप शायद लोग पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लें और चीजों को 2-3 दिन में जितना भी हुआ है उसको एक बार, जैसे कि आपने भी बताया कि जब तक हम उसको एक बार देखेंगे नहीं और उसको जब तक समझेंगे नहीं, और इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, तो हम अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रोफेसर ओमजी गुप्ता, डायरेक्टर सेंटर फॉर इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस, टू से फ्यू वर्ड्स अबाउट द होल वर्कशॉप। डॉक्टर आशुतोष जी, हम लोग कंक्लूडिंग सेशन में हैं और बड़ा फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ, और इसमें जो वर्कशॉप थी ये 3 दिन की, इसमें काफी अच्छा पार्टिसिपेशन भी रहा, और जितने भी एस्पेक्ट्स थे OER से रिलेटेड वो कैटेगोरिकली और बड़े नाइसली जो है वो इलाबोरेट किए गए। हमारे जो रिसोर्स पर्सन थे डॉक्टर मैथिली एंड डॉक्टर मानस द्वारा, और जितनी भी इसमें क्वेरीज रेज की गई
और जो लोगों ने पार्टिसिपेंट्स ने प्रैक्टिस करके अपने अनुभव भी शेयर किए, उसमें वो काफी अच्छे ढंग से उसको हैंडल किया गया। तो हम तो इसमें सबको बधाई देते हैं। और जैसा कि मैडम डॉक्टर डायरेक्टर सिमका प्रोफेसर मधु परिहार जी ने कहा कि केवल चीजों को सुन लेना या उसको जो है केवल लेक्चर सुन करके हम बहुत आगे नहीं जा सकते, उसके लिए हमको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जब तक जो भी हमने सीखा है 2-3 दिनों में, या जो लोग पहले से जानते तो उसको अपडेट किया है, तो उसको जब तक हम लोग आगे प्रैक्टिस नहीं करेंगे या जब तक उसको हम लोग एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, शायद और बेहतर ढंग से उसको नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं, जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, तो निश्चित रूप से इसको ध्यान रखेंगे और आगे इसको हम लोग इसको व्यवहार में लागू करेंगे। इसमें 2-3 सुझाव महत्वपूर्ण रूप से आए हैं। जैसा कि डॉक्टर मानस ने बताया, 2016 में हम लोग की जो OER पॉलिसी बनी थी, निश्चित रूप से इसमें समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए था और ये कुछ एक कारणों से शायद नहीं हो पाया है, तो इसको हम लोग रिव्यू करेंगे। और जो सुझाव उन्होंने दिया है, निश्चित रूप से चूंकि 5 साल का समय बीत भी गया है और कई इसमें डेवलपमेंट्स हुए भी हैं, और पॉलिसी में खुद भी देख रहा था तो कुछ लग रहा था कि भाई लैग कर रहा है। तो निश्चित रूप से हम लोग आके उनको सुझाव के लेकर के उनके जो भी एक्सपीरियंसेस है, उनको जो एक्सपर्टाइजेशन है, उसको भी उसमें बातचीत करके और उनको लेकर के हम लोग उसको रिवाइज करेंगे। और निश्चित रूप से हम लोग इसमें कुछ एक बातें आ रही थी कि जो OER पॉलिसीज के तहत जो हमारे कंटेंट्स आते हैं, उसमें जैसा कि डॉक्टर मानस ने एक्सप्लोर किया था कि इसमें क्या क्या क्यों किया जा रहा है या इसमें क्या फायदे हो सकते हैं। इसमें 2-3 चीजें जैसा कि डॉक्टर मानस ने पॉइंट आउट किया, उसमें एक 2 चीजें हम और ऐड करना चाहते हैं इसमें। एक तो ये कि जो कास्ट इफेक्टिव थी है कि जो भी कास्ट हमारी ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुकी है, उसको रिपीटिशन को बचाना। और इसमें एक और चीज जो हमारे जो रीजनल हमारे जो हमारा जो कंट्री है, बहुत एक वाइड रेंज का है, चाहे वो कल्चर के मामले में हो या हमारा जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें, जैसे अगर हम कलकत्ता का देखते हैं या उड़ीसा का देखते हैं या MP है, हमारा राजस्थान है, जो भी ओपन यूनिवर्सिटीज की अगर बात करें इसमें, तो जो भी कंटेंट्स डेवलप किए गए हैं, से फॉर एग्जांपल टूरिज्म को ले लें, तो टूरिज्म की जो रिक्वायरमेंट्स है वो निश्चित रूप से उत्तराखंड की जो टूरिज्म के जो प्लेसेस हैं वो अलग होंगे, वो हाइट पर हैं। उसी तरह से उड़ीसा का अलग होगा। तो वो जो भी राइटिंग की गई है, हम लोग एक दूसरे को ले करके भी और उनके अनुभवों को अपने में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो इसमें एक है कि जो भी एक्सपर्टाइजेशन है उसको भी हम यूज कर सकते हैं, और वो एक तो हमारा रिपीटिशन बचेगा, कास्ट इफेक्टिव होगा, और साथ साथ में जो भी रीजनल रिक्वायरमेंट्स है, जो रीजनल जो कोर्स डेवलप किए गए रीजनल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, तो उसको भी हम लोग एक दूसरे के अनुभव को भी साझा कर सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से ये जो शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं, इसी तरह शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टाइजेशन या शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, ये तमाम इसमें जो है वो लाभ मिल सकता है। और ये तमाम बातें हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया, इसको हम रिपीट नहीं करेंगे, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ OER हो या CC लाइसेंसिंग हो या कैसे इसको जो है जो डिफरेंट हमारे जो रिपोजिटरीज हैं, तो कैसे उनको एक्सप्लोर किया जाए, या आप अपने जो भी OER है कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, रिमिक्स कर सकते हैं। तो ये तमाम बातें इसमें डेवलप चर्चा की गई और इस पर काफी महत्वपूर्ण ढंग से इस पर बातचीत हुई, इसमें एक्सप्लोर किया गया, इसमें बहुत अच्छे ढंग से इसको जो है वो एलाबोरेट किया गया। तो ये निश्चित रूप से अंत नहीं था, क्योंकि ये शुरुआत थी और हम लोगों ने एक नया अभिनव प्रयास था हम लोग के हिसाब से, क्योंकि ये एक ऑनलाइन जो वर्कशॉप जो है ये और शायद बहुत कम हुआ है या बहुत शायद पहली या दूसरी बार हो रहा है। तो हम लोग इस एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाना भी चाहेंगे। और जैसा कि प्रोफेसर मधु परिहार जी ने कहा, डायरेक्टर सिमका ने, कि हम लोग उनके अनुभवों का लाभ लेकर के, उनके जो एक्सपर्टाइजेशन का लाभ लेकर के इसको इस स्पेस को आगे जारी रखेंगे और निश्चित रूप से आपका सहयोग हमको मिलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी धन्यवाद ज्ञापन औपचारिक रूप से तो प्रोफेसर आशुतोष गुप्ता जी जिसको भी कहेंगे वो करेगा।
लेकिन सीका की तरफ से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सिमका का, डायरेक्टर सिमका, डॉक्टर मानस रंजन जी का, डॉक्टर मैथिली का, और अपने जो माननीय कुलपति महोदया प्रोफेसर सीमा सिंह जी का भी, कि उन्होंने जो प्रयास किया है, तो निश्चित रूप से हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और सफल होंगे। धन्यवाद। प्रोफेसर आशुतोष गुप्ता जी। थैंक यू सर। अब मैं प्रोफेसर मधु प्रहार जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वर्कशॉप का जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहें। थैंक यू प्रोफेसर आशुतोष। कंक्लूडिंग रिमार्क तो थोड़ा बहुत तो मैंने बोल दिया है, पर मैं सिर्फ ये सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, और वो मैं हमेशा अपने यहाँ पे कुलीग्स को भी कहती हूँ, और विच इज आई ऑल्सो से एवरीथिंग इज एप्लीकेबल टू मी ऑल्सो। इट इज नॉट कि मैं प्रवचन दे रही हूँ टीचर्स को, आई एम ऑल्सो ए पार्ट ऑफ यू, अ टीचर। हम जितना एक्सप्लोर करेंगे ना चीजों को कि क्या हो रहा है, मेरे टीचर ने मेरे को कहा जो एजुकेशन में है, मतलब टीचर्स हम सब एजुकेशन में, those who are in education, if they cannot think about education for 24 hours, उन्होंने तो अब मैं सोचती हूँ, पता नहीं पहले शुरू में तो मैं कहती थी पता नहीं क्यों कह रहे हैं 24 hours. If you cannot think about education for 24 hours, we should not be a teacher. So मैं उसको थोड़ा सा और कम कर रही हूँ. I'm not saying घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फैमिली है एंड ऑल दोस थिंग्स, पर क्या हम एक्सप्लोर करें, क्या हम उसके बारे में सोचें. थिंकिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 21st century स्किल. थिंकिंग बहुत होती है. एंड देन सेकेंड इंपॉर्टेंट इज द 21st century स्किल इज लर्नेबिलिटी. मैं कितना सीख सकती हूँ या कितना सीख सकता हूँ, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और हर एक ह्यूमन बीइंग की कैपेबिलिटी है कि वो बहुत सीख सकता है, और टाइम 24 घंटे हम सबके पास बहुत है. सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूंगी, लता मंगेशकर के पास भी वही 24 घंटे हैं, बट ठीक है भगवान की देन होगी उनके पास, कितना अच्छा गाती है, पर प्रैक्टिस किया ना, प्रैक्टिस कर करके वहां पे पहुंच गए. पर 24 आवर्स उनके पास भी हैं. तो अगर हम थोड़ा सा अपने आप को और स्ट्रेच करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं. द फ्यूचर इज गोइंग टू बी दिस टेक्नोलॉजी. और मैं तो कई दफा सोचती हूँ कि हम OER इज ए 20-year-old कॉन्सेप्ट. 2020 या उससे पहले ही आया था, पर हम एजुकेशन सेक्टर वाले जो हैं, नॉट U.P.Rajarshi, आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग वन, पर जब हम एजुकेशन सेक्टर वाले हैं, ऑल ऑफ अस, हम उसको इम्प्लीमेंट अप्लाई देर में करते हैं. सो लेट्स सी नाउ द फ्यूचर, कि फ्यूचर में और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी. कल ही मैं पढ़ रही थी, एक मेटावर्स कुछ आ गया, वर्चुअल रियलिटी से भी कुछ ज्यादा एक आ गया मेटावर्स. तो तमिलनाडु में एक कपल है, वो शादी अपनी सारी टेक्नोलॉजी को मेटावर्स टेक्नोलॉजी यूज करके वो कर रहे हैं. सो विच इज गोइंग टू बी एन एप्लीकेशन इन एजुकेशन ऑल्सो. सो लेट्स कीप थिंकिंग ऑफ इट एंड लेट्स वर्क टूवर्ड्स, so that our students, जो हमारे students हैं, वो और बेहतर सीखें. With these words, all the best. I must thank the Vice Chancellor, Professor Seema Singh, जो मैंने देखा day 1 से तीनों दिन continuously हमारे साथ रही. Maybe in between वो अपना काम जरूर कर रही होंगी, क्योंकि उनकी position require करती है to pay attention to other important work. But she was there, she was listening to the whole concepts, and I'm sure we will work together in future. I also thank her team, जिन्होंने ये पूरा entire team, एक एक का नाम लूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, प्रोफेसर आशुतोष and Om ji and so on.
but her entire team has to be appreciated. The faculty, the coordinators, the academic counselors. Last and not the least, my two young colleagues, friends, if I say, Dr. Maitri and Manas, both of them. Excellent thing they did it. Thank you so much and all the best. सब जने अपना सेफली रहिएगा, वायरस अभी कहीं नहीं गया है, सब सेफ रहे. Thank you, madam, for your kind and precious words. Now I would like to request Honorable Vice Chancellor Professor Seema Singh ji for his presidential address for the workshop. थैंक यू आशुतोष जी. कोई अध्यक्षीय संबोधन नहीं है यहाँ पर. प्रोफेसर मधु को सुनने के बाद मैंने बाकी चाहे कुछ भी मिस किया हो, लेकिन प्रोफेसर मधु का मैडम का कोई भी डेलिब्रेशन मिस नहीं किया इस पूरे 3 दिनों में. एंड आई एम रियली हैप्पी कि आपके साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ, आपकी पूरी टीम के साथ, और हमारे पूरे परिवार, विश्वविद्यालय परिवार को बहुत कुछ सीखने को मिला. OER के कंसेप्ट, स्ट्रेटजीज, रिपोजिटरीज, प्लेटफॉर्म, उनके सारे कंसोर्टियम के बारे में, एंड लाइसेंसिंग, 6 लाइसेंसिंग, 5 hours, many things. तो कैसे सर्च करेंगे, कैसे ऑडियो वीडियो सर्च करेंगे, कैसे उसको यूज करेंगे, रिमिक्स करेंगे, रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रिवाइज करेंगे, सारे टर्म्स जो हैं जो हमारे लिए नए थे, कुछ के लिए तो बिल्कुल ही नया कंसेप्ट था. जैसा कि अभी कोई हमारा पार्टिसिपेंट्स बोल भी रहे थे कि OER के बारे में बहुत सारे मिथ्स से बहुत डर था, किसी कंटेंट को हम यूज करेंगे तो क्या होगा, जैसे छोटी छोटी बातें जो हम किसी से कह नहीं सकते, और वो इस प्लेटफॉर्म पे हमें जानने का मौका मिला. और हम जो कॉन्फिडेंस हमारे पार्टिसिपेंट्स में आया, हमारे टीचर्स में आया है कि हम OER को पहचान सकते हैं, उसकी लाइसेंसिंग को देखकर उसको कैसे यूज किया जाए, और बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं. तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा मौका उनको नहीं मिला होगा और आगे मिलता रहे. इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिमका टीम से, मैडम से, कि हमें, क्योंकि अभी हमने, जैसे आप कह रही थी कि हमें उसको यूज करके ही सीखना है. एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज द बेस्ट लर्निंग, और जब तक हम खुद नहीं करेंगे उसको, तब तक सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा. अभी ये जो हमारा फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी कि हमने इस नॉलेज को गेन किया, हम अवेयर हुए अबाउट OER, एंड धीरे धीरे जब हम उसको प्रैक्टिकल में लाएंगे तो और भी बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होंगे. जब आप क्वेश्चन पूछ रहे थे तो बहुत सारे लोग उन क्वेश्चंस को नहीं पूछ पा रहे थे, क्योंकि अभी वो प्रैक्टिस में चीज नहीं आई है. तो जब तक हम उसमें अंदर जाएंगे नहीं, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि इसमें हमारे क्या प्रश्न हैं. अभी तो हमारे दिमाग में वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो रही थी कि व्हाट इज OER एंड व्हाट आर द वेरियस R's एंड व्हाट आर द लाइसेंसिंग. तो वो सारी चीजें अब हम उन सारे टर्म्स से को जान गए हैं, और अब जब भी कहीं भी आएगा OER से रिलेटेड मटेरियल, या हम खुद जाएंगे, वीडियोस देखेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, और भी आपको समझ में आएगा कि ये मैडम बता रही थी, मैडम मैथिली ने ये बताया था, या मैडम मधु ने, या मानस जी ने, और धीरे धीरे हमसे एक्वेंटेंस हुई है अभी खाली. और हमको इस पे बहुत काम करना है. हमें आपका बहुत सहयोग है. मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, मैं दिल से आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम आपने हमारे साथ किया, और हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे और आपको तंग भी करते रहेंगे. बहुत सारे प्रश्न हमारे होंगे, अभी तो हम जब प्रैक्टिस में आएंगे तो बहुत सारे प्रश्न होंगे जिसका जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे, और मुझे लगता है आप लोग जरूर हमारी मदद करेंगे, और हम सब मिलकर वो जो ये जो नॉलेज का पूरा समुद्र है उसको इसमें से कुछ लेके आएंगे, अपने में ऐड करेंगे, और ज्यादातर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे. और जो मुझे लगता है हम लोग का मोटो ये रहेगा कि हम हिंदी में कंटेंट को पूरे देश तक, जितने जो हमारे हिंदी भाषी राज्य हैं उन तक पहुंचाएं, और अपना एक अलग, अपनी एक पहचान बनाएं कि हम इस तरह के कार्य कर रहे हैं और कर सकते हैं. निश्चित रूप से हमें भी बहुत कुछ करना था, हमने नहीं किया, लेकिन आज हम ये संकल्प लेते हैं आपके माध्यम से कि हम जरूर इसमें काम करेंगे, अपनी पॉलिसी को सुधार करेंगे. पहले हमारी
मैडम आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। रुक गया है, उनका वीडियो भी और ऑडियो भी मैडम, है ना? उनका इंटरनेट इश्यू होगा शायद कुछ। प्रोफेसर आशुतोष जी, आप वोट ऑफ थैंक्स के लिए लगभग कंक्लूड हो चुका था मैडम का ऑब्जर्वेशन, तो चाहे तो आप वोट ऑफ थैंक्स के लिए कुछ सचिव जी से कह सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो अब लगभग कार्यक्रम हमारा समापन की ओर है, तो मैं फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए रिक्वेस्ट करता हूं हमारे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर पीपी दुबे साहब को कि प्लीज से फ्यू वर्ड्स। प्रोफेसर पीपी दुबे। धन्यवाद आशुतोष जी। परम आदरणीय कुलपति उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज प्रोफेसर सीमा सिंह जी, आदरणीय निदेशक सिमका प्रोफेसर मधु परिहार जी, एवं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के दोनों तरफ के सदस्यगण, ये हमारा सौभाग्य है और गर्व की अनुभूति हो रही है कि ये 3 दिवसीय वर्कशॉप हमारे विश्वविद्यालय और सिमका के माध्यम से आयोजित किया गया, जिसमें काफी पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया, और उसके लिए आभार ज्ञापन के लिए आप लोगों ने मुझे अवसर दिया। सबसे पहले मैं आभार ज्ञापन करना चाहूंगा अपनी परम आदरणीय कुलपति जी का, जिन्होंने लगातार ही इस विषय में विचार करने, प्लान बनाने और इस प्रकार का वर्कशॉप आयोजित करने की प्रेरणा हम लोगों को दी और इसे हर तरह से संभव बनाने का प्रयास किया। मैं आभारी हूं विश्वविद्यालय की तरफ से और अपनी तरफ से भी प्रोफेसर मधु परिहार जी का, जिन्होंने सिमका की तरफ से पूरा सहयोग किया, और आपकी टीम के सदस्य डॉक्टर मानस जी और रिसोर्स पर्सन के रूप में डॉक्टर मैथिली जी ने जितना सराहनीय प्रयास किया हम लोगों को इस विषय में एनरिच करने के लिए, इसके लिए डॉक्टर मानस जी और मैथिली जी भी धन्यवाद की भागी हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा अपने सीका के निदेशक प्रोफेसर ओम जी गुप्ता, जो इस पूरे कार्यक्रम को कन्वीन कर रहे थे, और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में प्रोफेसर आशुतोष गुप्ता जी ने जितना प्रयास किया कि अच्छे ढंग से सारे लोग जुड़े और जुड़ करके इससे जो है लाभान्वित हों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। और मैं आभारी हूँ जितने भी हमारे प्रतिभागी और मित्रगण रहे हैं, सहयोगी रहे हैं, हमारे क्षेत्रीय समन्वयक रहे हैं, हमारे अध्ययन केंद्रों के समन्वयक और काउंसलर्स रहे हैं, और इसके अलावा जो अन्य लोग इससे जुड़े हैं, जुड़ करके जिन लोगों ने पूरा 3 दिन की OER पॉलिसी पर जो वर्कशॉप चल रहा था, जिससे अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग किया इन लोगों ने, इनके भी हम आभारी हैं, बहुत बहुत आभारी हैं आपके। और पर्दे के पीछे से जो हमारे कर्मचारियों ने सहयोग किया है, जो हमारे मित्रों ने सहयोग किया है, वो लोग पर्दे के सामने नहीं आ पाए, उन लोगों के प्रति भी मैं आभार ज्ञापन करता हूं। अंत में सभी लोगों के प्रति बहुत ढेर सारा आभार और धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं एक दो चीजें कहना चाहता हूं हमारे पार्टिसिपेंट से कि आपको फीडबैक फॉर्म का एक लिंक शेयर किया गया है, तो कृपया उसको फीडबैक को भर दें ताकि हम ये देख सकें कि ट्रेनिंग जो आगे की होगी या हम आगे फ्यूचर ट्रेनिंग करें तो उसके लिए हमें और क्या आवश्यकता है और क्या और चीजें रहेंगी। दूसरा कि आपने जो भी आपके नाम और एफिलिएशन करेक्शंस थे वो अभी तक हमको मिल चुके हैं, और मैं पॉसिबली कल तक हम आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स इशू करेंगे। तो इसी के साथ मैं वर्कशॉप को कंक्लूड करता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।